यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, which is the part of mendelism, means it is related with the genetics and the molecular biology. Mainly it is related with the genetics, means that this mendelism, you know that mendelism, it gives information that how the genetic characteristics are transferred from one generation to another generation. If you go through the points related to this mendelism, that is a part of laws of inheritance. This mendelism, it was given by the famous scientist, the Gregor John Mendel. Gregor John Mendel gives information that how the genetic characteristics are transferred from one generation to another generation, or how these characteristics are transferred from parents to offspring. So let's just talk about this mendelism in the part of introduction. हम लोग सबसे पहले introduction देखेंगे. Later on, we will start the different laws of inheritance, which was given by the Gregor John Mendel. So first one, that is the introduction part. Let's talk about this introduction part. A keen observer readily recognizes why in the nature organisms resembles one another with their progeny generation after generation. अगर कोई कीन ऑब्जर्वर होता है तो वो फाइंड आउट करेगा कि क्यों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होते हैं, या फिर क्यों दो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम दिखाई देते हैं. ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है. The keen observer readily recognizes why in the nature organisms are resembles to one another with their progeny generation after generation. मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देती है. मींस मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. So why this happen? It can be observed by the keen observer. The organisms like the plants, animals, and the prokaryotes also, and also shows some observable differences among their progeny, though they have received hereditary information from a common ancestor. मतलब इनका कहना ऐसा है कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स को और उनके ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व करते हैं, so most of the characteristics are similar, but there are certain differences are also. ठीक है, मतलब ज्यादातर कैरेक्टर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी कैरेक्टर सेम ही आते हैं. Some of the characters are different from parents to offspring. तो ऐसा क्यों होता है? Means similar characters भी आते हैं और कुछ differences भी होते हैं, right? If you observe the characteristics in between your parents and you, ठीक है, अगर हम लोग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं हमारे पेरेंट्स में और हम में, तो ज्यादातर कैरेक्टर्स सेम ही होते हैं. ठीक है, 2 legs, 2 hands, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, right? So most of the characteristics are same, but certain characteristics are different. Means you can observe that the similar as well as dissimilar characters are transferred from parents to offspring or from one generation to another generation. Now why this happen? Since the species continue to exist through many generations, the hereditary material must be inherently stable. Therefore, species resembles to each other generation after generation. इनका कहना ऐसा है, since the species continue to exist through the many generations, यानी जो स्पीसीज होती है, कोई भी स्पीसीज, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक स्पीसीज लेते हैं, एक स्पीसीज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इट इज वन ऑफ द स्पीसीज. द स्पीसीज इज इनहेरेंटली स्टेबल. स्पीसीज जो होती है वो इनहेरेंटली स्टेबल होती है. देयरफॉर स्पीसीज रिजेंबल्स टू ईच अदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब स्पीसीज जो होती है वो सेम ही होती है. इसका मतलब उनके जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी नियर अबाउट सेम ही आते हैं. However, within most of the species, immense hereditary variations are also present. Therefore, species also shows differences or diversity among their populations. For example, although most of the plant species have the same overall appearance and originated from the common ancestral stock,
they usually look quite different. तो इनका कहना ऐसे है कि जो स्पीसीज होती है, कोई भी एक स्पीसीज अगर हम लोग लेते हैं तो उनमें वो स्पीसीज जो होती है वो इनहेरेंटली स्टेबल होती है, और इनहेरेंटली स्टेबल होने की वजह से उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द सेम. बट इन सम केसेस, कुछ ऐसी केसेस होती है दैट within most of the species immense diversity variations are also present. ठीक है, यानी कुछ ऐसी स्पीसीज होती है कि भले ही वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करती है, लेकिन उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. चेंजेस क्यों आते हैं? Therefore, the species also show the differences and the diversity among their population. मतलब वो स्पीसीज अगर वेरिएशन शो करती है, चेंजेस अगर शो करती है नेक्स्ट जनरेशन में, देन इट विल लीड्स टू द डाइवर्सिटी. ठीक है, इसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी आना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर कोई प्लांट स्पीसीज लेते हैं, then the species have the same overall appearance and originated from a common ancestral stock, they usually look quite different. मतलब ऐसे कुछ प्लांट स्पीसीज होती है कि उनका एंसेस्ट्रल स्टॉक सेम होता है. ठीक है, मतलब उनके एंसेस्टर सेम होते हैं, लेकिन उनके प्रोजेनी जो होती है, नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, वो सेम नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मैंगो के प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है, तो मैंगो के प्लांट्स के एंसेस्टर तो एक ही होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, लेकिन मैंगो के अलग अलग प्लांट्स हमें मिलते हैं. ठीक है, whether they belongs to the same species, but the two different species of the mango, they show the variations. ठीक है, वो वेरिएशन शो करेंगे. So all these conditions are totally related with the inheritance of character. In hereditary material, variation is an essential phenomena for the evolution, which brings the cumulative change in the genetic characteristics of the population of organisms over a considerable time period. So in the hereditary material, a material variation in the essential phenomena. ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द वेरिएशंस. So in the hereditary material, now what is this hereditary material? Hereditary material, it is nothing but the part of genetic material. In this genetic material, variation is an essential phenomenon. अगर इस हेरिडिटरी मटेरियल में या फिर जेनेटिक मटेरियल में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंजेस अगर आ जाते हैं, सो इट विल हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. मतलब न्यू स्पीसीज इवॉल्व होने के लिए ये वेरिएशंस हेल्पफुल हो जाते हैं. सो दिस हेरिडिटरी मटेरियल, if it shows variations which are essential phenomena for the evolution, which brings the cumulative change. Now what is this cumulative change? Cumulative means it indicates the additive change, or the additive effect can be carried out with the help of variations in the genetic characteristics of the population of organism, and it can be carried out over a long period of time. मतलब जो चेंजेस होते हैं या फिर जो कोई वेरिएशंस आते हैं, वो वेरिएशंस या फिर वो चेंजेस जो होते हैं, these changes or these variations are not for the specific or the limited time. ये वेरिएशंस जो होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होते हैं. These variations are considerable for the over a long period of time. मतलब कोई भी चेंज ऐसा नहीं होता कि आज पर्टिकुलर स्पीसीज में वेरिएशंस आ गए तो फिर आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में भी वेरिएशंस यानी इंस्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. The evolution or the variations are carried out over a long period of time. For example, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, today is the World Earth Day, 22nd of April. तो अर्थ जब एग्जिस्ट हुई थी तो एट ए टाइम ऐसा नहीं हुआ था कि अर्थ सरफेस पे पानी आ गया, उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, हायर ऑर्गेनिजम्स आ गए, ऐसा नहीं हुआ. स्टेप वाइज प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन केस ऑफ दैट डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. So happy Earth Day to all of you. Now next point, evolution is the most important phenomena of life. So evolution is very important phenomena, yes, right? Because the evolution, it brings about the various changes and the various diversity in case of all the living organisms. So evolution is the most important phenomena of life, which is responsible for the origin of enormous number of species of living things.
in the plants, animals, and prokaryotes, etc. So जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसमें वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस आने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने की वजह से वहाँ पे इवोल्यूशनरी कंडीशंस क्रिएट होती है। इवोल्यूशन होने की वजह से वहाँ पे न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट हो सकती है। That's why this evolution, it is most important phenomena in case of the life cycle of living organisms. ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है, इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ स्पीसीज। मतलब जब भी इवोल्यूशन होगा तब वहाँ पे एक नई स्पीसीज ओरिजिनेट होंगी। इट मे बी इन केस ऑफ प्लांट्स, इट मे बी इन केस ऑफ एनिमल्स, और इट मे बी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। Evolution provides us a logical basis for understanding how the complex organisms existing today were derived through the continuous lines of descents with time-to-time modification from the first primitive organism. इवोल्यूशन एक ऐसे मैकेनिज्म है कि जो हमें लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करती है, मींस हमें सोचने के लिए हेल्प करती है कि दैट कैसे कि कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से कैसे मल्टी सेल्युलर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, so evolution provides us the logical basis for understanding how the complex organisms existing today were derived through the continuous lines of descents, that is a part of evolutionary history, with time to time modification from the first primitive organism. मतलब सबसे पहले जो primitive organism आया होगा हमारे अर्थ सरफेस पे, उस primitive organism से लेकर अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स जो प्रेजेंट है, वो कैसे इवॉल्व हुए होंगे उसके बारे में हमें एक ही मैकेनिज्म हेल्प इंफॉर्मेशन दे सकती है, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन. So the evolution, it is the only process which can give the information that how this simple form of organism is converted into the complex form of organism. With this brief introduction, one can easily understand that the basic factor which is responsible for to brings about the resemblance and differences among the species generation after generation in nature is the hereditary material. मतलब ये सभी डिस्कस करने के बाद, इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हमें फाइनली यहाँ पे ये समझ में आता है कि that basic factor which is responsible for the resemblance and differences among the species from generation after generation in the nature is the hereditary material. मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स में या फिर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में अगर कोई रिजेम्बलेंस आते हैं या फिर कोई डिफरेंसेस आते हैं, so these resemblance or the similar characteristics, means we can say that similarities and dissimilarities in between the parents and offspring, it is caused due to the hereditary material. Finally, this hereditary material is responsible for the similarities and differences in between the parents and offspring. So I think all of you are getting this point. सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing here the part of mendelism. Mendelism, it is famous for that inheritance of character from one generation to another generation. That Gregor John Mendel gives information that how the genetic characteristics are transferred from one generation to another generation, and it can be explained with the help of laws of inheritance. So in case of introduction, they give information that in between the parents and offspring, or from one generation to another generation, the characteristics are transferred. Whenever these characteristics are transferred, some of the characteristics show similar characteristics and some of the characteristics they are dissimilar characteristics. Similarities and differences are transferred from parents to offspring or from one generation to another generation with the help of one of the material which is called as a hereditary material. There are two properties of hereditary materials. That is, the first, the progeny of organism develops characteristic similarities with that of the organism, and second, there are always differences among the individual belonging to the same species. So here they given the two important points after the hereditary material.
There are two properties of hereditary material. Hereditary material की दो properties होती है. There are two properties of the hereditary material. First property, that progeny of organism develops the characteristic similarities with that of the organism. ठीक है, मतलब जो भी प्रोजेनी वहां पे डेवलप होंगी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन जो डेवलप होंगी, पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होंगी, उसमें सिमिलैरिटीज तो होंगी, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज तो होंगी ही, मतलब पेरेंट्स के जैसे मोस्ट ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर्स वहां पे होंगे. सेकेंडली, देयर आर ऑलवेज differences among the individual belonging to the particular species. मतलब whenever the genetic characteristics or the hereditary material is transferred from one generation to another generation, that there will be a presence of similarities in between the parents and offspring, as well as there are also present the differences amongst the parents and offspring. जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग हमारे पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली दिखाई देते हैं क्या? नहीं. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग सेम नहीं दिखाई देते, कुछ डिफरेंसेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. So this information given by the Mendel, that whenever the characteristics are transferred from parents to offspring, there are certain similarities and certain dissimilarities are present in between the particular species. In fact, no species, that is, plants, animals, prokaryotes, etc., are similar in absolute. मतलब ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं होती है कि जो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करती होंगी. एग्जैक्ट कॉपी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम लोग क्लोन्स कहेंगे. ठीक है. सो इन फैक्ट नो स्पीसीज, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, आर सिमिलर इन एब्सोल्यूट. देयर आर ऑलवेज minute difference either in morphology or in the biochemistry in the parents and their progeny. इन्हें ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे या फिर एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करेंगे. उनमें कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस वहां पे प्रेजेंट ही रहेंगे, whether they are present in case of morphological appearance or they are present in the biochemical appearance. Thus, the science which deals with the study of principles of resemblance and variations among the species may be defined as a genetics. So finally they given the definition of genetics. यहाँ पे इन्होंने definition दी है genetics की. The science which deals with the study of principles of resemblance and variations among the species may be defined as the genetics. So हम लोग genetics लेंगे. So basically this genetics, it is a scientific study. ये scientific study होती है in between the parents and offspring, which is related with the heredity and the variations. The scientific study in between the heredity and variations in relation to the particular species or the particular organism, it is called as the genetics. In other words, genetics is the science of inheritance and variations. अभी अभी मैंने आपको बताया कि genetics को अगर basically अगर देखा जाए, so that the scientific study, अगर हम लोग scientific study करते हैं heredity और variations की, ठीक है, मतलब inheritance और variations की अगर हम लोग scientific study करते हैं, then it will be the part of genetics. ठीक है, उसे हम लोग part of genetics कहेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. We are unfortunate since we do not have records of the various records of views of the first human on the earth who have advocate as to why the species resembles more to their parental species than other member species of the population and why this happened. We are unfortunate, मतलब हम लोग अनलकी है कि हमारे पास ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है या फिर कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है कि जो सबसे पहला रिकॉर्ड आया हुआ होगा अर्थ सरफेस पे. ठीक है, हम लोगों ने ये सभी जो इन्फॉर्मेशन ली है, इट इज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड वेरियस रिसर्च, राइट. So we are unfortunate to since we do not have records of views of first human. ठीक है, यानी फर्स्ट ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ होगा, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे आए होंगे. ठीक है, या फिर पेरेंट जनरेशन जो होंगी उनमें कौन से रिजेंबल्स होंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, दूसरे जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगी उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन रिसर्च की हेल्प से या फिर हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लोगों ने वो सभी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया था. However, there are records of the Greek philosopher Hippocrates
and Aristotle clearly put forwarded and explained their views in the form of theory after the keen observation and extensive study why there are resemblance among the relatives. So there are two um, keen observer, right? The Greek philosopher Hippocrates and Aristotle. You all of you have heard about all these famous names, Hippocrates and Aristotle. Aristotle, that is the father of biology and botany also. So the Hippocrates and Aristotle clearly put forward it, explain their views in the form of theory after the keen observation and extensive study why there are resemblance among the relatives. जो रिलेटिव्स होते हैं मतलब जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं नियर अबाउट रिलेटेड स्पीसीज वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिजेम्बलेंस क्यों शो करते हैं मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करते हैं उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था. Their ideas were published in the History of Genetics by the H. Stubb. What we know today about the genetics is based on the gene theory of inheritance, begin with the work of Gregor John Mendel. आज हम लोग जो genetics पढ़ते हैं, this genetics it is given by the famous scientist that is the Gregor John Mendel. ठीक है? यानी आज का जो modern day genetics जो हम लोग पढ़ते हैं, this modern day genetics it is totally related or it was given by the great scientist that is the Gregor John Mendel. Now let's just talk about this mendelism. Mendelism के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे. Gregor John Mendel in 1822-1884 is appropriately called the father of genetics. Obviously, Gregor John Mendel is called as the father of genetics because he gives the first scientific explanation related to the genetics. Means he gives information that how the characteristics are transferred from parents to offspring. That's why the Gregor John Mendel is popularly known as the father of genetics. He was born in 1822 to a poor farmer family in an area that is now part of Czechoslovakia. So that Gregor John Mendel was coming from very poor farmer family. एक poor farmer family से belong करते थे Gregor John Mendel. I think it is a part of Austria. ठीक है. And nowadays it is known as Czechoslovakia. As a young man, his desire for education was seriously hampered by poverty, and in order to continue his studies, he entered in the Augustinian monastery at the Brunn and was ordained a priest in 1847. That young man, it is very curious about the education, and that's why he started his study and he entered in the Augustinian monastery at the Brunn. Means he joined one of the education society to get the education related to the particular field and was obtained the priest in 1847. Means firstly he was acting as or he was working as a priest. Priest सब लोगों को पता है धर्मगुरु जिसे हम लोग कहते हैं. तो स्टार्टिंग में मेंडल ने वहां पे एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में वो प्रिस्ट करके काम करना शुरू किया उन्होंने. Later, he was sent to the University of Vienna for training in the physics, mathematics and natural sciences. उसके बाद में उन्हें भेजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ वियन्ना में. वहां पे वो पढ़ने लगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस. Though he was not stood excellent, however, training provided him with many technical and mathematical skills that were of value in performing his later experiment. स्टार्टिंग में तो ऐसे कुछ एकदम हाईली टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन वो जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे एडवांस टेक्निक सीखते गए, टेक्नोलॉजी सीखते गए. ठीक है. मैथमेटिकल स्किल्स लेते गए कि वो सभी स्किल्स उनको फिर आगे उनके एक्सपेरिमेंट में काम में आने वाले थे. After return to the Brunn in 1854, he appointed as a teacher, and in 1857 he began his famous experiment on the pea plant in the monastery garden. In Mendel's experimental selection of the garden pea plant, Pisum sativum was evidently not an accident, but the result of long, careful thought.
So I think this is for the today's lecture.